की पेन है मतलब. क्या? Wisdom tooth की पेन है. Oh yeah. So today our podcast was there और ये बहुत पहले प्लान हो चुका था और कल रात को इतना पेन हुआ so इसलिए you can see my this side is full swollen up and I cannot laugh. If I'm smiling I'm looking like Varun Dhawan and my whole family was laughing at me सुबह सुबह और मुझे इतनी शर्म आई थी. I was about to cancel and I was like चलो ठीक है I'll just show this profile. So ये पूरे podcast से मेरा ये profile दिखेगा. No, but you look fine. You look fine. No, But no. yeah, दर्द के लिए I'm Yeah, really you sorry. don't laugh at me. I don't laugh at Yeah. you. No, I won't. So you're getting wiser. This means, right? Because this is the I wisdom. hope so. This is the I last. just turned 25. Of There's course. the time for me to get wise. Anytime. So I hope you're fine now, and thank you so much for being here, Chika. Like me in Mumbai, you here Yeah. on this podcast. सुबह तो काफी दिल भारी हो गया था कि यार चीका क्या बोल रही मैं है. सुबह से मैं बता रही हूँ I took 4 medicines and my whole brain is numb. तो मेरे सारे answers बहुत वैसे होने वाले हैं. काफी Yeah. नशे वाले I आंसर. just सब नशे वाले. Crazy. So I'm high on medicines. वैसे भी this is the unwrapped sessions Yeah. powered by KFC Crispy Shawarma Wrap. We have Ruchika in the house. She's the kind of creator who tells stories from her heart and they resonate with everyone. She has been doing crazy amount of work when it comes to doing crazy poetry work, doing stand-up poetry shows where she does storytelling shows. She has been consoling broken hearts, giving hopes to so many heartbroken people out there. So thank you so much, Chika, for being here. This episode is gonna be fun. Yeah. We have been friends, we have been talking, Yeah, on and we off. have been in touch. It's been like almost 5 years. I have known you. है ना? Almost 4 or 5 years तो पक्का है. Like 2023. 3. So 3 years. Yeah, 3 years. But yeah, from the very beginning you Yeah. connected. Yeah. I So- was in Kashmir, you were here. वही और मुझे हमेशा से था कि किसी दिन कश्मीर जाओगे I'll meet you. Thank you so But much. I haven't been to Kashmir. Now you will. Yeah. We'll have that trip Yeah. soon, yeah? So my first question to you is, Chika. Which will... KBC का वो question होता है. क्वेश्चन नहीं KBC नहीं, ये काफी चिल क्वेश्चन है बट सीरियस है थोड़ा. मैं सीरियस ज़्यादा हो नहीं पाता हूँ बट अब स्टार्टिंग में सीरियस होना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे फैंस देख रहे होंगे तो वो तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहते होंगे जो नहीं जानते. तो कुछ अपनी कहानी के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो उनको भी नहीं पता है. So poetry was never my plan. It happened to me. Poetry मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि I didn't choose poetry. Poetry chose me. And I wanted to become an actor. And I was into filmmaking. Acting नहीं हुआ उसके बाद में I started making advertisements. So I directed, I wrote a lot of advertisements. I've made a lot of advertisements for brands. I used to cast my own family, myself. क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को भी बहुत शौक था कैमरा के सामने ना तो इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ फन एंड देन पोएट्री हैपेंड टू मी एंड व्हेन आई गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स तो आई वाज लाइक कि चलो ये चल रहा है. और कभी कभी ऐसा नहीं होता लाइफ में योर गोल इज़ लाइक कि यू जस्ट वांट टू बी नोन एंड यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ. तो आप इतने हाथ पैर मारते हो, इतने आप इधर उधर आप हाथ पैर और कहीं भी हाथ लग जाता है वो चल रहा है तो आप चलते रहो. So poetry was that for me and I never knew I had poetry in me. Like मुझे अभी भी लगता है कि ऐसे कैसे हो गया because I was never a good reader. मैं कभी किताबें नहीं पढ़ती थी. मैंने कभी देखे नहीं लोगों के shows वगैरह. So it was really God chose me for this and I'm very grateful. See, a lot of men are poets. Yeah. But I have not seen a lot of women as poets. Yeah. And when... This is because women are not given freedom to speak. Damn. Yeah, because there are so many women who write, but they don't have the courage to express. And men always had that. And this is changing now. And I can see so many women now coming into spoken word poetry because we are finally able to speak it. That's nice. That's nice. Do you think that, women still do not get equal treatment from the society? Obviously. मैंने अभी नीना गुप्ता का पॉडकास्ट देखा था एंड शी हैव बिन अ रिबेल
in her times. And rebel भी नहीं बोल सकते, she was very strong headed in terms of her decisions. उनको जो सही लगता था उन्होंने करा. And she अभी spoke कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में चेंज हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड दैट इज़ सो ट्रू. आई कम फ्रॉम राजस्थान, आई कम फ्रॉम जोधपुर. देर मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा चेंज इतना आया नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज when you still go out there to see boys, even in my generation, my friends, they would never want a wife who is working, who is earning more than them. तो ये अभी तक है. इट इज़ ओनली लाइक पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो थोड़ा डेवलप हुआ है. बाकी एवरीवन इज स्टिल कि नहीं, हम लोग डेट करेंगे एक अच्छी ऐसे कूल लड़की को, लेकिन घर हम लाएंगे जो घर में रहे, हमसे दब के रहे. सो दिस इज़ नॉट चेंजिंग एंड दिस टॉपिक मेक्स मी सो फ्यूरियस समटाइम कि मैंने बहुत अपने मेल फ्रेंड से झगड़े करे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मेरे आसपास वाले लड़के तो सुधर जाओ, मैं दुनिया नहीं सुधारूँ तो क्या, मेरे आसपास वाले लोग सुधर जाए. That's cute. Yeah. And what about like feminism kind of thing? I know it's like still like a now old thing to discuss about, like, but this is related to feminism and Yeah. like feminism in India. What's your view about that? Feminism in India is a very far, it is like a goal which is very far from us. Equality is nowhere near us. मतलब अभी तक ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत साल बाद भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और आएंगे भी नहीं, ठीक है. पर मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ट्रीटमेंट होना चाहिए ऑफ वुमेन. और मतलब ऐसा होता है ना कि आप पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, और फिर एंड में जाके बोल रहे हो चलो शादी कर लो, काम छोड़ दो. तो आपने पढ़ाया लिखाया क्यों? तो it's more of कि, and even today if a girl is doing well, she will never be called settled. She will always be called settled when she finds a boy. And finding a boy for a girl who is earning, who is living on her own terms is another struggle. तो वो अलग ही स्ट्रगल है कि एक ऐसा लड़का मिले जो ये सब के लिए ओके होए, which is so sad. You are very vocal supporter for like women's rights, women's equality, and No, I'm supporter of anything which is right. अगर कल को मेरे सामने एक लड़के के साथ बुरा होएगा, I won't be someone कि I will stay shut कि नहीं क्योंकि लड़का नहीं. I will always speak up for what is wrong, for what is right. Yeah. that's beautiful. That's why I really admire you. You have been very brave. I see your work on social media. It's phenomenal. It's phenomenal. So talking about you as a girl, what do you think you should change in you, and what is the best thing about you? Change in me might be my Gussa. how do you know that? My gussa. And I have this very dominant side of me, Uh-huh. which helps me also in my work because I don't listen to people a lot. So I just do whatever feels right to me. पर कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है डोमिनेशन, और मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी बहुत ज़्यादा. एंड वन थिंग दैट आई शुड चेंज अ लॉट should be giving chances to people. I give a lot of chances to people. If someone does bad to me, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है ना, दोस्ती में भी या इवन इन वर्क रिलेशनशिप, आई स्टिल फील कि चलो एक और बार करके देखते हैं, एक और बार करके, क्या पता अगली बार हो जाए. पर होता नहीं है. किसी ने अगर आपको पहली बार अपना ट्रू कलर्स दिखाए, इट्स एंड, दैट इज़ द पर्सन. सो आई रियली वांट टू चेंज दैट. आई जस्ट वांट टू कट ऑफ पीपल who are not giving anything but bad times to me. And one thing that I love about me is आप बताओ. मैं अपनी तारीफ कैसे करूँ? You are a great friend. I know that. You do a lot of things for your friends. Yeah, I am a great friend. Yeah, I make my friends chill a lot. Yeah, but I don't know if you're a great girlfriend or not. But great friend you are. You for real are. Yeah, What kind of a girlfriend you are? I've never been a girlfriend, honestly. Like really? Yeah, honestly, I've never been in like a proper relationship. Okay. I've always been in platonic relationships. सब कुछ मेरे दिमाग में होता है कि I used to always find one boy I used to like, he never used to like me, and I used to chase. So my half of my
teens and even like half of the 20s, I've only chased a lot. Chased. Yeah, I've chased. That's really bold. Something unpredictable. Just like our crispy shawarma wrap. That's ये amazing. कौन सा प्रमोशन था ये भाई? तुम क्या- चेज कर रही हो, तुम तो ये भाई, बोल्ड भाई, है, भाई, काफी बोल्ड है, क्या और हमारा bold है? ये शोरमा भी बोल्ड है. बेवकूफी ये बेवकूफी है. तो never been a girlfriend. Like I've been, but I've never been like Like proper. Like I've never found like a man. oh. Yeah. I've always used to pay for our dinners and everything. Yeah, and it's sad. जो भी था वो शर्म की बात है भाई, शर्म की बात. मसला ये है कि मेरी प्रॉब्लम है ये, बिकॉज ऐसा होता है ना, इवन विद ड्रीम्स. जब मैंने स्टार्टिंग में एक्टिंग को जब मैं चेस कर रही थी, नहीं हो रही थी एक्टिंग, और मुझसे नहीं हो रही थी एक्टिंग, बट आई गेव माई 3 years टू एक्टिंग. फिर भगवान ने आके बोला कि सुनो तुम पोइट्री में अच्छी हो, तो मैं आई चोज पोइट्री. एंड नाउ इज़ अ टाइम फॉर मी टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट हैपनिंग टू मी. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल वॉज माई करियर. तो अब मैं बस सब कुछ भगवान पे छोड़ना चाहती हूँ, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लाइक give out more energy and chase things. It's better to sometimes release कि भाई भगवान के ऊपर है, अब जो होगा वो होगा. नीचे, you don't need a man like who really takes care of you or something like that. You don't need that. You don't Every need that. girl needs that. Yeah. Every girl. I don't need a man to take care of me. Every girl needs a man to like just hype her. So I just need a man to hype me. Like he Like should, you're looking beautiful. Yeah, when I go up on stage and when I get down on stage, he should be like कि bro you Wow, what a killed it. performance, yeah. तो मैं आपको पता है, आपको खुशी में ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी शख्स की. तो मुझे बस कभी कभी बहुत लोनली लगता है when I'm in my happiest zone. So I think your man should be with you anytime, anywhere. Yes. Just like a crispy shawarma. Oh God. ये क्या प्रमोशन है? Yeah, see, this is the show. Like, you know, a brand वाले यार, Yeah, they expect me yeah, to say all yeah, this, yeah. But of course, that's like anytime, anywhere. Yeah. You can have a shawarma anytime, anywhere. Wow. Thank you so much. Thank you so much, Sika, ये कहानी बताने के लिए. मज़ा आ रहा है, काफी मज़ा आ रहा है. So talking about this. मेरे गाल सही लग रहा है ना? अरे भाई टेंशन नहीं लो. नहीं आ रहे ना, ठीक है. मैं फनी नहीं लगनी चाहिए. नहीं, आप प्यारी लग रही. तो जेनजी जो ये जेनजी डेटिंग ट्रेंड्स हमने देखे, Yeah. क्रेजी ट्रेंड्स रहे. Crazy. स्पेशली जब से इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आने लगी, Yeah. लॉट ऑफ रील्स teaching people about different kinds of Yeah. things, like no one knew what gaslighting was. जब बाद में पता चला अच्छा gaslighting तो बस बेवकूफ़ बनाना हो गया ना. Yeah. You say something which you have किसी को done. फालतू का होप देना. Yeah. किसी को फालतू का होप देना भी gaslighting है. हाँ. या किसी को ऐसा बोलना कि मैंने ऐसा नहीं किया जबकि तुमने वो ऐसा किया होता है. वो भी तो वही है ना, होप. हाँ. हाँ. तुम्हें gaslight किया किसी ने? सबने सबको किया है ना. अच्छा. मैंने किसी को नहीं किया. तुम करोगी किसी को gaslight? मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है कि मैं बैठ के किसी को गैसलाइट करूं. ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है बहुत वेले लोग होते हैं जो ये सब हरकतें करते हैं, क्योंकि यू रियली नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू पुट इन कि किसी को आज हमें बेवकूफ़ बनाना. आप इमेजिन करो उन लोगों की साइकोलॉजी क्या होएगी जो लोग धोखा देते हैं कि हम 6 महीने किसी से बात करेंगे और 7वें महीने उठ के बोलेंगे ओ मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है. तो तुमने 6 महीने काम पे काम ध्यान दे दो ना. तो आई ऑलवेज बिलीव दे बहुत वेले लोग हैं ये लोग जिनके पास इतना टाइम है ज़िंदगी में कि टू वेस्ट योर टाइम एंड समवन एल्स टाइम. और क्या ट्रेंड्स है? दूसरे ट्रेंड्स क्या है? किसी को घोस्ट करना. डू यू घोस्ट पीपल? Yes. You ghost people? Yeah. Is it good? Sometimes. Is it good? I have to. Like sometimes if few people gets whoever gets like creepy and they expect me, मतलब कोई ऐसे होता है ना इंस्टाग्राम पे तो randomly there are so many people, so many influencers also, they keep texting you. तो बहुत एक पॉइंट के बाद creepy लगता है तो फिर you have to ghost. मैं पूछूंगा नहीं कौन नहीं. बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड. काफी Yeah. लोग करते हैं इरिटेट. But tell me about you.
What about How me? many girls have you ghosted? I- मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही है बहुत लड़कियां होगी और बहुत लड़कियों को घोस्ट किया और If I commit with like, you know, Yeah. 100% responsibility and Yeah. everything. I don't ghost my loved ones, but if I have ghosted you, that means I never loved you. So take care. Yeah, that's what it This is is. so harsh. Either like 100% Yeah. or nothing. That's it. To really, you know, change the vibes here now. Yeah. Let's like, you know, focus on to your forte, like your USP, Yeah. your poetries, USP. your beautiful words, you know, which go viral on Instagram, Yeah. and you do your shows. Yeah. So right now we expect some crazy poetries from you, you know, which will just touch the Oh, by hearts the of way, the I'm people. doing my shows. Yeah, Yeah. when's your next show? Next show is happening in Pune, Ooh. 26th April, and then Bombay. I'm doing a very big show, 17th May. It's a 780 seater auditorium. So for me, it's a very big deal. और मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि मैं कैसे करूँगी. Guys, yeah. show पे जरूर जाना. 27th, 26th is in Pune. 26th April. Yeah, April. Pune. And 17th May in Bombay. 17th May in Bombay. I'll be Yeah. there. You guys be there. Yeah, you have to be there. Inshallah, I'll be there. So Chika, अभी फिलहाल मेरा एक पर्सनल पोइट्री सेशन आपके साथ होना चाहिए ना यार. ये थोड़ी सी इबादत बहुत सिला देती है. कभी कभी हल्की सी दुआ भी अर्श हिला देती है. अब यू टेल. तेरे होने से ही तो ये एहसास है कि मेरे पास तो कुछ खास है. आबरू आबरू मैं हमेशा तेरा ही रहूं. मेरे ख्वाब में तू आया फिर से. ये रात होना मुख्तसर. बैठे ही रहे बातें ही करे. ये मयार होना मुख्तसर. वाह. तेरे होने से ही तो ये एहसास है मेरे पास तो कुछ खास है. आबरू आबरू मैं हमेशा तेरा ही रहूं. कि किसी से जुदा होना, कि किसी से जुदा होना इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने फरिश्ते नहीं आते. है ना? Damn. Separation is so, it is so painful. But yeah, it is painful. But तो है ही नहीं. Separation is always painful. When you got separated with the loved one, you know, with Yeah. your loved one, I think the How did you move on? we never move on. Like I was separated from my nani, and separation can also happen na, from death. It's like the peak of separation. You can never see them again. When I lost nani के बाद मुझे असली मतलब समझ आया what is the meaning of separation. And it's then you accept कि सच में इंसान चला ही जाता है. And yeah, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि like whenever we are in a bad situation, it will be a bad situation forever. And we don't realize कि रात के बाद सुबह आता है. ठीक है ना. तो ये मैंने ये पढ़ी थी, काफ़ी बहुत सुंदर मुझे लगती है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. तो ये मुझे बहुत पसंद है. जी ये अहमद फराज साहब की Yeah, poetry. yeah. You like it? Yeah, I really love This it. is this is one of the legendary Yeah. poetries of his. I remember another one of his. हाँ. अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले. जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले. Oh, wow. Do you keep roses in your diary? Do you like dry roses? No, You don't like dry roses? I like fresh roses. You like fresh? I don't know. There's this obsession. There's this obsession where people love dried roses. I don't know. Yeah. But you know, I have this weird this thing that I keep things from people. Like if you give me a chocolate and you're special for me, I'll keep the wrapper forever with me. मेरा ऐसे memory cupboard है. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती है, बोलती है सब कबाड़ तुम रखते हो और फिर तुम मुझसे मेमोरी बोलते हो. और मम्मा को अब समझ आया कि why I write poetry is because I keep holding on to things. That's beautiful, Chica. That's beautiful. एक लास्ट टाइम. Yeah. शिकवे शिकायत की बात नहीं, ये तो ज़र्फ़ की बात है. नाम भी मेरा ना रहा याद जिसे,
वो शख्स मुझे वर्ग वर्ग याद है कि वर्ग वर्ग याद है. वाह क्या बात. Crazy, crazy. Yeah. That's nice, that's nice. I think जो तुम्हें वर्ग याद है उसे तुम बिल्कुल भी याद नहीं है. थैंक्स यार. मेरा संडे एकदम ही मुझे एनर्जी आपने दे दी. वो भी अभी दांत दर्द होंगे, अब मेरा दिल दर्द होगा. Right, all right, Chiga. I think we talked a lot. Now let's move into a crispier segment of ours, which we call KFC Crispy Shawarma Rapid Fire. So this is gonna be a rapid fire. Do you like rapid fire? This is all about our wow moment, and you have to bring out the wow from the audience and from me. अच्छा, और वाव नहीं निकला आपके. तो मतलब तुम वाव नहीं हो. अच्छा. तुम्हें कुछ ऐसा विटी जवाब देना ना कि मैं बोलूं कि वाव चिका दैट वाज क्रेजी. ठीक है. तो I'll try. आई होप दैट वो वाव Yeah, मोमेंट I'll निकले. try. तुम ट्रिगर करो वाव Otherwise you मोमेंट. fake it. I'll try to fake it. Yeah. But audience would fake it, right? Audience will watch it and they'll be like, क्या वाव था. हाँ. तो तुम कुछ ऐसा कहो कि मैं बोलूं वाह. ठीक है. Just one word. Shawarma moment. Let's go, guys. Let's go for the rapid fire. Writing on phone or paper? Phone. Phone. Love or detachment? Love. Silence or music while writing? Silence. Okay. Posting instantly or overthinking drafts? Posting instantly. Posting instantly. Yeah. ज़्यादा सोचते ही नहीं है. नहीं. A line you're most proud of? A line I'm most proud of कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी तो ज़िंदगी है, अब उसमें भी किसी से पूछ के छुट्टी लेने पड़े तो क्या फ़ायदा. And it goes on. Yeah. Wow. That can be the wow moment. Wow. चलो एक पॉइंट मेरा. Maybe इससे अच्छा wow निकले कुछ. ठीक है. A line you almost didn't post? A line I didn't. What? You didn't post like all अच्छा, okay. There was this poem that I wrote about men in love. ठीक है. और it went really like it got like real love. पर जब मैंने लिखा था तब I was very confused. It goes like कि ज़िंदगी की सारी खूबसूरत चीज़ें एक तरफ और जब एक मर्द प्यार में होता है उसका नूर एक तरफ. ठीक है ना. तो ये goes on. But that time still even till today मैंने real life में कभी ऐसा देखा नहीं. But I just wrote out of my imagination. Oh, that was wow. Yeah. You should have you posted Yeah, it? I have posted. Crazy. But it was about you didn't post. Yeah, I almost didn't post. Okay. चलो ठीक हाँ. है. Almost didn't post. Almost. Do your poems come from real life or imagination? Imagination plus real life. Both. Both. 50-50. One emotion you write about the most? Heartbreak. Heartbreak. Crazy. Something you feel deeply but never say out loud? That I love being cared. Yeah, I love being cared. I love when if I'm holding something which is heavy and if someone comes and says चलो मैं उठा लेता हूँ तो इन्हें कि चलो उठा लो. Oh, cute. You Yeah. like to be pampered. Yeah, I love. That's nice. I love That's being nice. that. One emotion you avoid writing about? Heartbreak, because I keep on writing about it. A feeling you keep coming back to? Love. Love. Yeah. How much love is there inside? I love being loved, and even I love being loved even on Instagram. तो अगर Instagram पे मुझे प्यार नहीं मिल रहा तो मुझे घबराहट होती है. आपको भी होती होगी. अरे होती थी, अब नहीं. A line that feels like it still belongs to someone. Still belongs to someone. कि मैंने लिखा था कि देखो दिल टूटता है जब वो चले जाते हैं लेकिन दिल ना बिखर जाता है जब उनकी शादी किसी और से हो जाती है. तो उस पर लिखा था मैंने कि उनकी हथेली में आज मेरा हाथ नहीं तो क्या हुआ, कि उनकी हथेली में आज मेरा हाथ नहीं तो क्या हुआ, उसके इतिहास के पन्ने तो मेरे हैं, वो आज गैरों से मेरा जिक्र करता है तो क्या हुआ, उस जिक्र में पहले वाली फ़िक्र तो है, वो देखता नहीं मेरी आँखों में तो क्या हुआ, वो घूर के गुज़र जाता तो आज भी है, वो उस जुल्फ़े संवारने आज आता नहीं तो क्या हुआ, उसके नाराज़गी की हकदार तो हम ही हैं,
क्या हुआ कि वो हमारा हो नहीं सका, उसके पास खड़ी लड़की को आज भी शक होता, तो हमसे ही आज भी ये शक होता, Oh, तो that हमसे toxic ex you are. yeah Crazy. That's there is a wow moment there, guys. Brought yeah to you by KFC, KFC. crispy shawarma wrap for you all. Yo, thank you. So we move on to our next segment, I yeah believe. yeah This is like KFC shawarma segment. Like जिसमें challenge भी तुम्हें मैंने ये rapid fire round हो गया segment देखा तो. Now we have challenge segment. yeah So I'll give you half sentences. You'll have to just complete it in your own way. Like challenge is that तुम कितनी blunt हो, कितनी real हो. Challenge तुम्हारे लिए वो है कि how real you keep it. yeah So let's begin. The worst thing about being a creator is you need to run like sometimes it's hard to get brands. that's the worst thing about being a creator. Man, तुम्हारे लिए brands मसला है. किसी के पास iPhone 6 है. अच्छा तुम्हारे को ब्रांड नहीं मिल रहे. iPhone 6 नहीं है लोगों के पास. iPhone 5 से वीडियो बना privilege रहे. problems. नहीं मैं बताती हूँ. worst thing about being a creator is finding your own people, finding your team. I think मेरे लिए तो ये है. I think वही finding your own people who will always cheer you. I knew I was famous when. When someone came and he painted a portrait for me and he gifted me. Ooh. Yeah. The most unnecessary thing I have done for content is. I've never done something that is unnecessary. I'm not that girl that I would do anything for views. Yeah. I act busy, but actually I am. I am busy. I don't act busy. I have to do a lot of things. I live alone in Bombay. I handle my own stuff. I handle my own financial things, and then I have to do my shows. I have to do my content. So I'm honestly busy. But I hate replying to messages. Yeah. The weirdest thing I have Googled is. Weirdest thing I've googled is गुवाहाटी कौन से स्टेट में है? Awesome, man. Awesome. Yeah. If Instagram disappears tomorrow, I will. Do a lot of shows. A lot of shows. Yeah. Crazy. One thing creators fake all the time is. Friendships. The most annoying comment I get is. आपसे शादी करनी है और बायोडेटा मुझे जीमेल पे आ जाता है. Say. I posted something and instantly regretted because. I posted a dance reel and I regretted because my shorts were visible. I was wearing a sari. Oh. तो मेरे shorts visible हो गए थे and then yeah. You regret. Yeah. And you took down the video. Yeah. Sorry. Sad, but good decision. Yeah. I judge people who. Who do a lot of nashe. You judge people who do a lot of Yeah. nashes. I like being around people who are inspiring. Why तो inspiring? जो लोग रात को पार्टी करते हैं, टाइम पास करते हैं, उनको मुझे ऐसा लगता है कि गेट ओवर इट ब्रो, लाइफ बहुत बड़ी है. One thing I'll never post, no matter what is. I will never post something which is not me. Like if someone says कि post wearing certain outfits, I would not do it. Yeah. I stalk Dash, but I'll never follow them. I stalk a lot of influencers, but I won't follow them. But I can't say name. You tell. Why would I? Why? You are asking me. You should tell No, me. all the people I like, I follow them. I don't need to stalk them. I just follow them. Yeah. That's it. You know, Cristiano doesn't follow me back. Yeah. But I, follow him. I have compared myself to Dash and felt Dash. I used to compare myself a lot with a lot of people, but I compare myself to Alia Bhatt.
You look like her. नहीं नहीं नहीं, I swear नहीं you नहीं do. जब वो 25 की थी तो उसने करियर में बहुत कुछ कर लिया था, तो कभी कभी मुझे फोमो होता है कि मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में। Bro, she was born. to या be- वही तो मुझे बस बुरा लगता है। तो जो लड़कियां But yeah, of course. जो लड़कियां मेरे से भी कम छोटी है और मुझसे बहुत ऊपर चली जाती है, तो मुझे लगता है कि मैंने क्या ही किया है लाइफ में। बहुत कुछ किया है. From where you have come या to where you have reached, that says a lot about you. Yeah. I feel most like myself when I'm around my school and college friends. Okay. Yeah. Lately, I've been thinking about. Lately, I've been thinking about dating Oh, and finding someone. oh. Right now, I'm trying to let go of. Let go of comparison and jealousy. Beautiful. Yeah. At the end of the day, what actually matters to me is My family. that's it. That's it. Amazing, beautiful. Yeah. So that was our KFC Shawarma challenge segment and it's done. यार बहुत पता ही नहीं चला इसके साथ पॉडकास्ट कैसे खत्म हुआ. यार इतनी crazy है यार ये. Crazy हूँ मैं. मजा तो आया हाँ, बहुत crazy. सब कुछ KFC ने बहुत अच्छा किया. Thank you so And I much. loved when you were like trying to, you know, I love do that. it. You know, I'm a non-veg lover. I love KFC. Yeah, yeah. You know, कश्मीर में 2 ही KFC अभी. हाँ. जोधपुर में तो एक KFC उसका नाम है कढ़ाई फ्राई चिकन. Crazy, crazy. पर आप सोचो जोधपुर में है ही नहीं KFC. नहीं, this was crazy. This Yeah. was crazy. I would, you know, I would love to meet you again Yeah. on the same podcast sometime. Like, Yes. But this time, this is the time to wrap it up. Thank you so much, and I loved it. And Is there anything you want to say to your fans? I just want to say that thank you so much for listening to me or listening to my poetries. I love writing. I don't take my job ऐसे ही, and it's not my job honestly. It's something that I love. I mean, I'm very grateful. I'm very grateful for you. Really, Thank really, you for thank you so calling much, me. Thank you so much. I hope Yeah. your दांत का हाँ भाई fine. दांत इसको याद आ गया. दांत भाई दांत मेरे सही हो जाए बस भगवान करे. कोई बात क्योंकि नहीं. मुझे मैं सच बता रही हूँ मेरे दिल में इतना दर्द नहीं होता जितना मेरे दांतों में होता है. इट्स कोई लाइक बात नहीं. रेकरिंग थिंग. सो या I hope you have a beautiful, beautiful life ahead. Yeah. You find the love of your life. You find. and then we'll come to something- Kashmir. Yeah. And we'll meet You can come for honeymoon and something like to Kashmir, of course. Done. I'll be there and have a beautiful time. It was Done. great. I just want, you know, my fans to know that this is Ruchika. Yeah. Go follow her. My favorite stand-up storytelling poet Thank from you. Mumbai, from India. Thank you so much. Thank you Ruchika. so much.